हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दोबारा से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू पेंट the caliper and the drum that are the parts of the braking system of the cars, and we're going to learn how to do that process of painting. I have chosen red color for my car. मैंने लाल रंग चुना है कैलिपर और ब्रेक ड्रम को पेंट करने के लिए। शुरुआत बड़ा ही आसान है। आपको गाड़ी को पहले लिफ्ट करना है जैक के यूज़ से, और मेरे पास जैक स्टैंड्स भी थे तो मैंने उनका भी इस्तेमाल किया। एंड द बेसिक logic is to remove the wheels from its places and access the caliper and the brake drum. So Alto 800 and most Indian cars come with the front disc brakes and the rear drum brakes. That is the combination that most cars or commuter cars come with. Some higher end cars have discs on all four sides. चारों चक्कों पे हाई एंड कार्स में डिस्क होते हैं, ऑल्टो में पीछे ड्रम और सामने डिस्क ब्रेक्स है। So the process starts from cleaning everything. The first preparation of painting any surface starts from cleaning. सबसे पहले साफ़ सफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सिंपल सा कार शैम्पू मैंने लिया है, टूथब्रश लिया है और उससे मैंने उसको साफ़ कर लिया है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ सैंडिंग। तो मैं सैंडिंग कर रहा हूँ रस्ट रिमूव करने के लिए। जो हमारा हब होता है व्हील का, उसमें काफ़ी सारा रस्ट जो है वो बैठ जाता है और ये काफ़ी नॉर्मल है, इसमें सोचने वाली या चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। तो जो पहला प्रोसेस वॉशिंग का है, उसके बाद हम लोग सैंडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सैंडिंग के लिए मैंने इंजन को स्टार्ट कर लिया है और इंजन को गियर पे डाल दिया है, क्योंकि एक ही व्हील हवे में है और गाड़ी में डिफरेंशियल होता है। तो जो व्हील हवे में होगा सिर्फ वो वाला व्हील घूमता है, जो अदर व्हील जो ज़मीन पे है वो नहीं घूमता है। सो आई एम यूजिंग द इंजन पावर टू rotate the wheels, which just makes my job easier as the car is equipped with a differential. Most cars are equipped with differentials, so the wheel that is in the air or doesn't have any load will freely rotate or move while it is on the jacks. Please note that this is not a very safe way of working. तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं व्हील को हवा में रख के उसको इंजन के पावर से घुमाने का, प्लीज़ मत कीजिए। आप नॉर्मली उसको हाथ से घुमा के भी पेंट कर सकते हो। Having the wheel up in the air and working on it is not a very safe way of working. If you do not feel confident about it, please use your hand to rotate the hub to paint or sand it. Do not use the engine power for it. So the painting process starts with primer. I am applying primer as the first coat. मैंने high temperature primer का यूज़ किया है यहाँ पे। ये मैंने मेरे फेज़र पे भी यूज़ किया था, उसके एग्जॉस्ट सिस्टम पे। तो वही वाला प्राइमर जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एज द फर्स्ट बॉन्डिंग सरफेस ऑफ द पेंट एंड द मेटल। वंस द प्राइमर sufficiently dries up, I would go ahead and paint the surface with the matte black paint that I have with me. So this is actually an exhaust paint. It's a high temperature paint again, and I am using that to paint the surface. So primer needs to be dry properly before you paint the surface, so you have to give about 15 to 20 minutes of gap in between the painting process. Moving ahead, you don't need to worry too much about the overspray that happens on the disc, as it's a general process. During the normal operation of the vehicle, that overspray is gonna get removed. जो बाकी का जो overspray हो गया है डिस्क के ऊपर, उसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कार यूज़ करने लगेंगे, वो जो overspray है वो निकल जाएगा ब्रेक पैड से घस के। सो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अच्छे से पहले मास्किंग करते हैं हमारे ब्रेक एंड हब के आसपास की जगहों को, ताकि हम जो रेड पेंट करने वाले हैं कैलिपर पे और हैंगर पे, वो हर जगह पे फैल ना जाए। Masking is a very important process, as if you do not do it properly, it looks very unprofessional, as there would be overspray all over the place and it absolutely looks bad on your car. This process can surely be done better by removing the brake pad retention clips. I was not aware how to remove it, so I just painted on top of them. If you know how to do it, please remove them and paint it even better. Masking and removal of equipments before painting gives them that professional look that you look for. तो मैंने इस हैंगर को बिना रिटेंशन क्लिप निकाले ही पेंट कर दिया क्लिप्स के साथ। अगर आपको आता है क्लिप्स निकालना तो आप क्लिप्स निकाल के भी पेंट कर सकते हो, उससे और भी अच्छा फिनिश आएगा और ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। मूविंग ऑन, वी आर masking even further the bleeding nipples and all, so that we can paint the caliper better and there are no oversprays
which makes that look a little more professional. तो मैं हर जगह पे मास्किंग करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि पेंट हर जगह पे फैल ना जाए और जो आपका लुक आए फाइनल वाला वो काफ़ी प्रोफेशनल और अच्छा आए. डू नोट दैट आई हैव वेरी वेल क्लीन द कैलिपर एंड द हैंगर सरफेस. मैंने बहुत अच्छे से कैलिपर और हैंगर को साफ किया है. आई हैव ऑल्सो डिग्रीज देम यूजिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. I could not show that in this video, so make sure that all those processes are done before you paint. During the painting process, your hand should be always in movement. कभी भी एक जगह से पेंट नहीं करना है, हाथ चलते रहना चाहिए. ज़्यादा मोटा लेयर पेंट का नहीं लगाना होता है, पतले पतले हल्के हल्के लेयर्स लगाने हैं. मल्टीपल लेयर्स लगाइए, टाइम लीजिए. 15 से 20 मिनट लगता है इसको सूखने में, तो वो टाइम उसको दीजिए और उसके बाद ही आप आगे के सरफेसेस पेंट कीजिए. सो गिव इट एनफ टाइम टू ड्राई बिफोर यू अप्लाई द नेक्स्ट लेयर, एंड दिस इज द फाइनल लुक आफ्टर द पेंटिंग प्रोसेस वाज कंप्लीटेड. Please note that all the equipments that I've used in this video will be in the video description. Video description check करना मत भूलिएगा. और अब लगा लेते हैं व्हील को वापस कार में माउंट कर लेते हैं. कुछ ऐसा दिख रहा है व्हील लगने के बाद. हमारा जो रेड कलर कैलिपर काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था, काफ़ी स्पोर्टी लुक आ रहा था. और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं कर रखा है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए. स्क्रीन पे पॉप हो रहा होगा उसके हैंडल्स एंड लिंक्स, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसके जो लिंक्स है वो दिए हुए हैं. मूविंग ऑन टू द रियर व्हील. सो रियर व्हील इज अ ड्रम एंड द प्रोसेस रिमेन्स ऑलमोस्ट सिमिलर, वेयर वी फर्स्ट रिमूव द कंटेमिनेशन ऑफ द surface using sandpaper and car shampoo. Okay, so I am removing all the contamination like rust or any other surface related contamination by sanding it well. I am sanding it so that the paint bonds well to the surface. So पहले कंटामिनेशन निकाल लेंगे हम लोग सैंडिंग करके. सैंड पेपर का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि सरफेस जो है वो पेंटिंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए, अच्छे से जो पेंट है उसका बॉन्ड बन जाए जो मेटल सरफेस है उसके साथ. ऑलरेडी ड्रम के ऊपर एक पेंट लग के आता है कंपनी से ब्लैक कलर का, उसको थोड़ा सा हल्का सा सैंड करके उसके ऊपर हम लोग पेंटिंग प्रोसेस कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है. Now I am using isopropyl alcohol to degrease the surface. सरफेस को डिग्रीज करने के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं. Isopropyl alcohol makes sure that the surface is completely degreased and all the contaminations are removed. One round of isopropyl alcohol removed a lot of dirt. You can see how dirty the tissue has gotten. तो मैंने इस टिश्यू का यूज़ करके अच्छे से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से इस सरफेस को साफ़ किया पेंटिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले. Again, the process remains the same. I mask the area so that the paint is not spreading over to the other parts, and I am using this VHT caliper paint. ये VHT caliper paint high temperature paint है, specifically brakes के लिए बने हुए हैं. इसी को मैंने front caliper पे भी यूज़ किया है और drum पे भी यूज़ करने वाला हूँ. And the concept remains the same. The hand movement should always be there. हमेशा हाथ चलते रहना चाहिए, कभी भी एक जगह से पेंट नहीं करना है. सेम प्रोसेस फॉलो होगा. और इस बार हाथ से मैं घुमा के पूरे सरफेस को कवर कर लेता हूँ इस VHT रेड कलर के पेंट से, जो कि हाई टेम्परेचर ब्रेक पेंट है. जस्ट मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेक द लेयर्स ऑफ पेंट टू थिक सो दैट दे डोंट स्टार्ट रनिंग. ज़्यादा मोटे लेयर्स पे नहीं मारना है. If you have watched this video till here, I hope you have liked the video and you have learned something new. If you did, do give it a thumbs up and share it with your friends and family. If you are new to the channel, do consider subscribing, and if you are already subscribed, do leave a comment onto this video. Thanks again for watching. Have a nice day. Take care. Bye bye.